Hello boys and girls. I think you spent quite some time on the assignment. तो आपके डाउट्स मैं भी 12 करके सॉल्व करूँगा, वो भी hopefully. And what I'm going to start is, you can keep revising your previous work. This work is just, what I'm going to start today is magnetism. And magnetism you can call it magnetostatics. सारे आर्टिकल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले थे वो हम 2 दिन में हमने रिवाइज कर देने हैं. चलो साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिवाइज से. Magnetic effect of current will always require a lot of revision, and I have given you a lot of assignments. The test was easy, फिर एक थोड़ी और मुश्किल assignments दे दी, and let's see, I will either form a discussion or write the solution for you. But I want to start with magnetism today. कदम बढ़ाए चलने का कुछ थोड़ा सा रिटर्न है, वो मैं आपको चलो 2-3 पेजेस की ना फोटो खींच के दे दूंगा आपको, ताकि ज़्यादा मेरे को बोर्ड पे लिखना ना पड़े. Certain substances were found to have attractive or directive properties. Yes, I'm talking about a magnet now, and these substances were able to attract small pieces of iron, nickel, cobalt. I have somebody's register with me here. When suspended freely, they point in a particular direction. When suspended freely, they point in a particular direction, and they are able to attract certain small pieces. And the end which is pointing towards north, if we have a certain substance which points towards a particular direction when suspended freely, the end which was, अगर ऐसे उसको freely suspend करो तो एक end हमेशा north की तरफ point करेगा. North is the direction. जो हमें डायरेक्शंस पता है, थोड़ा ना कंफ्यूजन होता है इस चैप्टर में, थोड़ा सा पहले ही बता रहा हूँ. नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ये हैं डायरेक्शंस. दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन और व्हेन द सन राइजेस. मैं तो ऐसे याद रखता हूँ कि व्हेन यू आर फेसिंग ईस्ट, देन टू योर लेफ्ट इज नॉर्थ. दे आर डायरेक्शंस. अब मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होगा, एक मैग्नेट का साउथ पोल होगा. एक नॉर्थ पोल हमें वैसे भी पता, लाइक अंटार्कटिका में एक नॉर्थ पोल है, आर्कटिक में एक साउथ पोल है. वहाँ कोई खंबा नहीं लगा हुआ. इट इज सिंपली दैट ऊपर एक पॉइंट है जिसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं. वो किसी मैग्नेट का पोल नहीं है, वो एक नॉर्थ पोल है, राइट. सो नॉर्थ इज सिंपली अ डायरेक्शन. व्हेन आई से नॉर्थ, इट विल बी जस्ट अ डायरेक्शन. सो इफ वी सस्पेंड अ मैग्नेट फ्रीली, इट पॉइंट्स टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. जिस डायरेक्शन में जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है, वो एंड को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं. आप बोलोगे नहीं सर, हमें तो बोला था कि उसको साउथ पोल बोलते हैं. वो जनाब ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट. नॉर्थ डायरेक्शन है सिर्फ, वो कोई मैग्नेट का पोल नहीं है. द नॉर्थ इज सिंपली अ डायरेक्शन. सो जिस एंड में नॉर्थ पोल पॉइंट, जो एंड मैग्नेट का नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, उसको हमने क्या बोल दिया, नॉर्थ पोल. और जो एंड साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, उसको हमने बोल दिया साउथ पोल. I will read the paragraph to you again. Certain substances were found to have attractive and directive properties. That is, they were able to attract small pieces of iron, nickel, etc. When suspended freely, they point in a particular direction. The end pointing north is called north pole, and the end pointing south is called the south pole. एक ना natural magnet है, which is called lodestone. It is called leading stone. वो गुमे हुए बंदे को हेल्प करता था. कुछ पत्थर थे जो वो समझते थे मैजिकल है, because it used to point in a particular direction. Lodestone. It was found in Turkey. टर्की में ढूंढा गया in the district of Magnesia, and that is why the ore from which the substance was obtained is called magnetite. ये भी एक कहानी है. Magnetite means, they say that there was a shepherd जिसके सोल्स रबर के थे, वहाँ नेल्स लगे होते थे. वो घास चराने जाता था एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ये ओर होता था, and when he used to come back, his soles were full of that ore, very tightly clasped. तो मैग्नस के जूतों में जो चीज बड़ी टाइटली
लगी हुई थी उसको उन्होंने बोल दिया मैग्नेटाइट. It's just a story, you know. Now, उसके बाद I'm just avoiding writing it. I'll just click a pic to you and send it to you. Properties of a magnet. Properties of a magnet बड़ी इंटरेस्टिंग है. पहली प्रॉपर्टी तो सिंपली आ गई that like poles will. दो पोल्स हैं मेरे पास, दो मैग्नेट्स हैं. Like poles will repel and opposite will attract. And remember that repulsion is the show test of magnetism. Suppose करो मेरे पास ये एक मैग्नेट है, एक कोई भी आयरन की बार है. सो अ मैग्नेट विल अटैक एन आयरन बार. पर अगर दो चीजें रिपेल करेंगी आपस में तो श्योर है कि वो दोनों मैग्नेट है. नहीं तो नहीं पता लग सकता, बिकॉज अ मैग्नेट विल अट्रैक्ट अ सिंपल पीस ऑफ आयरन ऑल्सो. लेट्स से वी हैव अ सिंपल पीस ऑफ आयरन. ये एक बार है मेरे पास, से ये नॉर्थ पोल है. यहां टच करो अट्रैक्शन, यहां टच करो अट्रैक्शन, राइट. पर उससे हमें ये नहीं पता लगता कि कौन सा मैग्नेट है. हो सकता है ये मैग्नेट हो और ये आयरन की बार हो सकता है ना. तो अगर रिपल्शन होगी तो ये हमें पता लगेगा कि कौन सा मैग्नेट है और कौन सा नहीं है. एनीवेज, इफ वी हैव अ नॉर्थ एंड अ साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, उन दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते. अगर हम किसी मैग्नेट को काट देंगे तो वो दो मैग्नेट बन जाएंगे. इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अ मैग्नेट. फिर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट एग्जिस्ट इन पेयर्स. मैग्नेटिक मोनोपोल्स आर नॉन एग्जिस्टेंट इन नेचर. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से ये एक चीज डिफरेंट है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वी हैव एन इंडिपेंडेंट positive charge and an independent negative charge, and we also have a dipole. Whereas in magnetism, we will always have a dipole. We will never have an independent north and south pole. Okay. Next, the poles of a magnet are of equal strength, and the poles of a magnet do not lie at the extremes. One extreme to the other is called the geometric lengths. जो पोल्स होते हैं वो थोड़े से अंदर होते हैं, यहां और यहां, ठीक है. एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक लेंथ. द मैग्नेटिक लेंथ इज एक्चुअली 6/7 ऑफ इट्स ज्योमेट्रिक लेंथ. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट लाइज एट इट्स पोल्स. एंड्स पे सेंटर में कोई मैग्नेटिज्म नहीं होता. So क्या कुछ लिखा जी हमने? Like poles repel, unlike attract. Not possible to separate the north and south poles. The poles always exist in pairs. Monopoles do not exist. Poles of a magnet are of equal strength, and they do not lie at the extremes, but they are slightly inside. And a line passing through the magnetic poles is called the magnetic axis, and a vertical plane passing through the magnetic axis is called magnetic meridian. एक चीज मैंने नई नोट की यहाँ पे, that the strength of the magnet lies at its poles. Okay, लो जी, मैं this is one page जिसकी मैं फोटो खींच के आपको भेज दूंगा. Coulomb's law in magnetism. Coulomb's law in magnetism. ये क्या कहता है? ये कह रहा है that if Qm is the pole strength of one magnet and Qm dash is the pole strength of another magnet, then force of attraction or repulsion between them is given by F is equal to mu naught by 4 pi Qm into Qm dash over R square. मैं ये काम करने को 3 दिन लगाऊंगा, उसके बाद शुरू होगा अर्थ मैग्नेटिज्म.
So in these 3 days you will revise your previous part, and when you will write this part, ये सारा अपने आप ही समझ आ जाएगा. So it is similar to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. Though independent monopoles do not exist, we will study the magnetic field due to one pole strength. दो चलो यार मैं आपको ना फोटो खींच के भेज दूंगा इन चीज़ों की, बड़ा बोरिंग हो जाता है. ठीक है, वो आप वही नोट्स बना लेना और मेरे को भेज जरूर देना. Then the intensity of the magnetic field at a point. What I have tried to say is कि independent monopoles ना exist नहीं करते हैं, but we can definitely study the magnetic field strength due to one pole strength. Intensity of the magnetic field. Intensity of the magnetic field at a point is given by the force acting on a unit north pole placed at that point. याद आया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का? The electric field strength or the intensity of the electric field at a point is given by the force acting on a unit positive charge placed at that point. Similarly, the intensity of the magnetic field at a point is given by the force acting on a unit north pole placed at that point. And the direction of the magnetic field will be the same as the direction in which the unit north pole would move if free to do so. So, यहाँ क्या बनाया हुआ है कि if we have a source QM north pole, then at a distance r from it, you have a point P. You have to find the magnetic field at P due to this north pole. B will be mu naught by 4 pi Qm over r square. K Q by r square जान के Q रख दिया सिंपल, पर Qm का मतलब है ये चार्ज नहीं है, ये मैग्नेटिक पोल है. mu naught by 4 pi Qm upon r square. डायरेक्शन कैसे दी जाएगी? We will imagine a unit north pole placed at this point. Source अगर north pole है तो magnetic field की डायरेक्शन 0. अगर मेरे पास ये QM यहाँ लिखते हैं, एक साउथ पोल है, then the magnetic field at the point P is B is equal to mu naught by 4 pi Qm upon r square. Direction radially inwards. ठीक है, F upon Qm dash बोल सकते हो आप. ठीक है, force per unit positive charge placed at that point. The magnetic field strength at a point is the force per unit positive charge placed at that point. तो यहाँ पे पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, पर यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. इंडिपेंडेंट मोनोपोल्स होते नहीं हैं, पर इट इज वेरी कन्वीनियंट टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन पोल स्ट्रेंथ. आई होप आई हैव वर्क दिस आउट. और बात क्या है इसमें? This is basically the magnetic field due to a pole strength. ठीक है? On the other hand, if we have an external magnetic field,
placed inside, when placed in the inside the external field, and that force is going to be QM into B. सपोज करो ये B की डायरेक्शन, तो अगर तो वो नॉर्थ पोल है प्लस QM है तो इट विल मूव अलोंग द फील्ड, अगर वो माइनस QM है तो इट विल मूव opposite to the field. The force on a north pole placed at one point is given by QM into B, just as it is given by Q into E. Remember, E is equal to KQ by R square. The electric field is due to the charge Q. Similarly, B is equal to mu naught by 4 pi Q by R square है तो KQ by R square QM लिख देते हैं. Here the magnetic field is due to the magnetic pole of strength QM. Over here, force acting on the pole QM, this QM can be positive or negative in an external magnetic field. If QM is positive, it will move along the field. If QM is negative, it will move opposite to the field. The value of the magnetic field at any point अगर ढूंढनी है किसी चार्ज के कारण, that is the force acting on a north pole placed at that point. Source positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है. Force acting on a magnetic pole positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है. I hope it is related well with electrostatics. फिर से एक बारी रिवीजन हो रही है. लो जी, let us magnetic dipole and magnetic dipole moment. ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. लो जी, मैं आपको फोटो खींच के भेजूंगा रजिस्टर की, आप नोट्स बना लेना क्योंकि रेपिटेशन ऐसा है. मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा? टू इक्वल एंड ऑपोजिट पोल्स फॉर्म अ मैग्नेटिक डाइपोल. नेट पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इज 0. Two equal and opposite poles separated by a distance constitute a magnetic dipole. And magnetic dipole moment क्या होगी? The product of each pole strength and the separation between them. Let me read this. बच्चे ने क्या लिखा हुआ? A system of two equal and opposite poles separated by a distance. Magnetic dipole moment is the product of either magnetic pole strength and the distance between them. It is a vector quantity defined from the south pole to the north pole. तो ये हमारे पास एक dipole है. This is called minus QM. This is called plus QM. This means this is the south pole and this is the north pole. इनमें distance 2a है. तो मैग्नेटिक पोल किससे मैंने किया डिनोट यहाँ पे? M से किया हुआ. डाइपोल मोमेंट पहले भी M से किया हमने. M is equal to QM into 2a. डाइपोल मोमेंट के यूनिट्स है ना जो, वो वहां एम्पियर मीटर स्क्वायर ही लिखेंगे. I into a भी तो होती है डाइपोल मोमेंट. अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई. जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था ना, वो सिर्फ एक तरह का था कि two equal and opposite poles separated by a distance. Here the magnetic dipole दो तरह का होता है. एक तो पोल स्ट्रेंथ, एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, बीच में सेपरेशन है, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है. लेकिन a current loop is also a magnetic dipole. A current loop is also a magnetic dipole. And we know कि एक एंड नॉर्थ है, एक एंड साउथ है. जैसे ये है. If I am observing from here, this is going anti-clockwise. अगर anti-clockwise है तो वो एक north pole है. I am trying to relate the direction of dipole moment is from south to
नॉर्थ। अगर इधर से देख रहा हूं तो वो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो एक नॉर्थ पोल है। अगर यही डायरेक्शन मैं इधर से देखूंगा तो वो मेरे को क्लॉकवाइज नजर आएगी, वो एंड साउथ पोल है। अ करंट लूप इज आल्सो अ मैग्नेटिक डायपोल। अ करंट लूप इज आल्सो अ magnetic dipole, and M is equal to I into A. On observing if the current is anti-clockwise, तो that end is the नॉर्थ पोल। ये देखो, ये जो n है ना, ये है ये एंटी क्लॉकवाइज दिस। दिस हेल्प्स अस इन मेमोराइजिंग। एंड इफ इट इज क्लॉकवाइज, then that end is the south pole. ये है ये क्लॉकवाइज। दस नई चीज है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ एंड द सेपरेशन बिटवीन देम। एक मैग्नेट है, वो एक डाइपोल ही है, होता ही डाइपोल है, एक अकेला पोल नहीं होता। बट इट इज कन्वीनियंट टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन पोल स्ट्रेंथ। सिमिलरली, वी कैन नेवर हैव वन पोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. We will always have a dipole placed in an external magnetic field. But the force acting on one pole is given by QM into B. रिलेट करो वहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक से। पर यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल जो है दो तरह का होता है। एक तो बिल्कुल उसी तरह का जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में था। Now a current loop is also a magnetic dipole. That is why the units of pole strength कितने आ जाएंगे? ये मैग्नेटिक डाइपोल के यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और पोल स्ट्रेंथ के यूनिट है, नोट में डाल सकते हो, यूनिट्स ऑफ पोल स्ट्रेंथ। QM के यूनिट्स एम्पियर मीटर स्क्वायर ओवर मीटर, which is एम्पियर मीटर। ये आपके डाइपोल की स्टोरी हो गई जी, ठीक है। अब ये बेसिक्स आपके खत्म हुए, इसकी मैं आपको फोटो खींच के भेज भी दूंगा कैसे लिखना है आपने। एक ही बार पढ़ना आपने, ये दोबारा नहीं पढ़ना। एंड इट इज रिलेटिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अलॉट। जो अब कराने लगा हूं वो बहुत ज्यादा रिलेटेड है। आई विल डिटरमिन द मैग्नेटिक फील्ड due to a magnetic dipole on the axial line and on the equatorial line. फटाफट कर दूंगा। ये मेरे पास एक ये माइनस QM है, जिसे मैं साउथ पोल बोल सकता हूं, बस ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। और ये मेरे पास एक प्लस QM है, जिसे मैं नॉर्थ। सो मेरे पास एक डाइपोल है, आई एम नॉट राइटिंग दैट इन इंग्लिश, m इज इक्वल टू QM into 2a. I have to determine the magnetic field on the axial line at a point P, which is at a distance r from the center. First of all, magnetic field at P due to the south pole is B1. ये क्या कर रहा हूं मैं? magnetic field on the axial line.
कितना आएगा जी? म्यू नॉट बाय 4 पाई QM बाय आर स्क्वायर। नॉर्थ पोल यहां रखा तो ये इधर को आ गया B1। अगली बारी magnetic field at B due to the north pole is B2 mu naught by 4 pi। नहीं गलत है, ठीक है गलती कर रहा हूं, जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं। दिस वुड बी R plus A square। Radially inwards। QM upon R minus A square। Radially outwards। B2। ये होगी फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन। माइनस करके आएगी, सारा आर्टिकल वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवाइज हो जाएगा। ऐसे ही सोच के करो। और इसके बाद मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टेस्ट रखना है ड्यू टू द नॉर्थ पोल से आ गया है। नेट फील्ड एट P is given by the principle of superposition। कितनी आएगी जी? B axial is B2 minus B1। ये म्यू नॉट इंटू QM बाय 4 पाई ये बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा मेरे पास 1 over R minus A the square minus 1 over R plus A the square, which is mu naught by 4 pi into QM R plus A the square minus R minus A the square। This is going to be 4RA over R square minus A square का whole square। इसमें से ये QM इधर से 2 ले लूंगा, इधर से A ले लूंगा, तो मेरे पास रह गया म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये 2 रह गया एक, QM into 2A is M into R upon R square minus A square the whole square। This is the magnetic field on the axial line। बिल्कुल सिमिलर रिलेशन है जी। वहां था 1 over 4 pi epsilon naught to PR over R square minus A square the whole square, and this is along the direction of the dipole moment। ये डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट है, ये मेरी डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। M वेक्टर ये रहा, डायरेक्टेड फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। Okay, and for a short dipole, that is R is very much greater than A। B axial आ गया mu naught over 4 pi 2M over R cube। आधी बार 4 आ जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल ये हो गया जी हमारा एक्सियल लाइन का, इक्वेटोरियल लाइन का। मैं टॉर्क तक करा के जाऊंगा आज, टॉर्क तक करा के जाऊंगा आज, और पोटेंशियल एनर्जी भी करा के जाऊंगा, काफी लिख दूंगा आज। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। On the
इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल या फिर न्यूट्रल एक्सिस। लो जी, ये मेरे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है। This is minus qm, which I call the south pole, and this is plus qm, which is the north pole, and this is the direction of the dipole moment, and this is also a and this is also a. ठीक है? We have a magnetic dipole of moment m is equal to q into 2a. This is the equatorial line. This is the point P where we will determine the magnetic field at a distance r. तो एक तो आ गई मेरे पास, चलिए यहां ले लेते हैं नॉर्थ पोल के कारण। यहां नॉर्थ पोल इमेजिन किया, रिपेल हो गया B1, और एक फील्ड आएगी मेरे पास इसके कारण। दिस इज B2 और B1 और B2 का मैग्नीट्यूड सेम। Magnetic field at B due to minus q is B1 mu naught by 4 pi upon r square plus a square under the root का whole square। mu naught by 4 pi qm upon r square plus a square। रेडियली चलो ये B2 है, चलो ड्यू टू प्लस QM इज B1, ओके, ये वाला आ गया। दिस विल बी रेडियली कॉन्वेक्स। नाउ magnetic field at T due to minus QM is B2 mu naught by 4 pi QM upon r square plus a square, radially inwards। मैंने शो कर दिया क्लियरली। B1 is equal to B2 equal to B से। अब क्या करेंगे? Because they are equal in magnitude, their resultant as given by the principle of superposition will be equally inclined to B1 and B2. The net field at P as given by the principle of superposition will be equally inclined to B1 and B2। तो अगर मैं ये पैरेललोग्राम पूरा करता हूं, ये देखो, ये और ये, तो क्या अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूं तो एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा। These are going to cancel each other and these are going to add up। ये दोनों रेड छोटे मिलके एक बड़ा बनाएंगे। ये रहा इनका रिजल्ट।
bigger black consists of the sum of this and this. So the normal components will cancel each other and the one opposite to the axis will add up, and the net field will be given by net field is given as B equatorial is equal to 2B cos theta. 2 B है आज B1 या B2 किसी भी वैल्यू ले सकते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई। वो फिजिक्स में कुछ नहीं करना होता, समझ के पिछला देख के आगे लिखी जाना है, QM अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। नहीं तो मैं नालायक कोई चीज पढ़ सकता था, पता लग गया कि ऊपर देख के नीचे लिखी जाना है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। I'm back. Can somebody else say? Cos theta की वैल्यू कितनी है? अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये आ गया A अपॉन अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, तो ये पड़ा जी हमारे पास QM इंटू 2A, ये M। So equatorial line पे फील्ड आ गई म्यू नॉट बाय 4 पाई M over R square plus A square the power 3 by 2, and this is opposite to the dipole moment. ये डायरेक्शन B E की आएगी हमारे पास, B E opposite to dipole moment. For a short dipole, R is very much greater than K. Therefore, this is mu naught by 4 pi M upon R. बिल्कुल डिट्टो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का काम है। एक बार ही करना आपने बस, बाकी तो फिर पेज ही पलटोगे। नाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज हो गई अपनी, और मैग्नेटिज्म इसके बाद कराऊंगा, वो थोड़ा सा चक्कर है, राइट ना। अच्छा, फिर क्या किया हुआ है जी? अच्छा, वो कंपेयर किया हुआ है। ओके, अगर मेरे पास नोट डाला हो, अगर मेरे पास एक शॉर्ट डाइपोल जिसकी मूवमेंट एट अ डिस्टेंस r 8 पॉइंट एंड एट अ डिस्टेंस r 8 पॉइंट। इंटरेस्टिंग, वहां भी क्या यहां पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट, यहां पे द फील्ड इज B axial in the direction of dipole moment, and at an equal distance of the equatorial line the field is B equatorial, which is in a direction opposite to the dipole moment. And we remember that for a short dipole B is mu naught over 4 pi 2m over r cube along m, and BE is mu naught by 4 pi
m upon r cube opposite to m. Clearly, B axial over BE is a 2. ये आ गया जी आपके पास टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल. ओके, बस ये लास्ट काम है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. कितनी देर का लेक्चर हो गया देखिए. वी हैव जस्ट 41 minutes, बस लास्ट थिंग 45-46 मिनट्स का लेक्चर हो गया. टॉर्क एक्टिंग, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल placed in an external magnetic field. सेम है, ये मेरे पास है एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, and I have a dipole, imaginary line. This is its moment. This is 2a. This is the minus qm south pole और ये plus qm north pole. I call this as A and this as B. B को मत लिखो यार, बस यही लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं. पहले बता दो, तो force acting on qm would be qm into B. qm into B along the field. And this is going to be qm into B opposite of the field. Force on a pole strength. अकेली पोल होता नहीं है, पर अगर डाइपोल के ऊपर भी स्टडी करना है तो अकेले अकेले पोल के ऊपर फोर्स कितनी लगती है वो मालूम होनी चाहिए. इसीलिए पहले लिखवा है on a pole strength minus qm is qm into B opposite to field. Then force on a pole strength plus qm is qm into B along the field. Right? अब these are two equal and opposite forces. Net force is 0. Net force on the dipole is 0. These two equal and opposite forces do not act along the same line. Hence, they form a couple. Moment of couple is torque, which is given by product of either force and the separation between them. The separation between them is ये आ गया, ये एंगल थीटा. तो ये कितना आया 2a sin थीटा, ठीक है, into 2a sin थीटा. तो ये qm into 2a कितना आ गया m. तो टॉर्क आ गया कि mb sin थीटा और टॉर्क इज m क्रॉस b. वहां क्या आता था
P क्रॉस E। तो यहाँ पे अगर ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ M है और ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ B है, तो M क्रॉस B इज द एक्सियल वेक्टर। ये टॉर्क की डायरेक्शन है जिसमें ये एंगल भी 90 है और ये भी 90 है। इट्स एन एक्सियल वेक्टर। The torque tends to align the dipole along the field. The torque tends to align the dipole along the field. For theta is 0, the torque is 0. The torque is 0. Discussion. Okay. डिस्कशन के 4 पार्ट बनाते हैं। वही फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। पहली बात, बी यूनिफॉर्म, थीटा नॉट इक्वल टू 0, तो टॉर्क एंड फोर्स बोथ रिलेटेड। नाउ टॉर्क एक्स, फोर्स 0। अब पता लग गया, याद आ क्या डिस्कशन होगी? बी नॉन यूनिफॉर्म, चलो बी यूनिफॉर्म लिखते हैं पहले। बी यूनिफॉर्म, थीटा 0, तो टॉर्क भी 0 और फोर्स भी 0। तीसरी बात, बी नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि इन दोनों पॉइंट्स पे बी की वैल्यू सेम नहीं और थीटा नॉट इक्वल टू 0, तो टॉर्क एक्स एंड फोर्स also acts. Net force is not 0. Fourth case, B non-uniform, थीटा 0, तो टॉर्क तो 0 होगा पर फोर्स नॉट इक्वल टू 0। फोर्स लगेगी, टॉर्क नहीं लगेगा। यही कुछ लिखा हुआ है जी। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी डिस्कस करते हैं। बस सर, नहीं सर, बस करो सर। अरे भाई, आप 2 पार्ट्स में देख लेना, कोई बात नहीं। और मैं तो टॉपिक पूरा करने का आज। जितना लेक्चर देखो रजिस्टर पर है, जितना लेक्चर होता है उतना ही पूरा करना है। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की जो कहानी है वो ना मैग्नेटिक मोमेंट से लेकर। मैग्नेटिक मोमेंट 2 तरह की है, एक मैग्नेट की और दूसरी करंट लूप की। स्टेबल इक्विलिब्रियम मींस टॉर्क इज आल्सो 0 एंड फोर्स इज आल्सो 0। स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये मेरे पास बी एक्सटर्नल है और मेरे पास एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ये पड़ा है। अगर करंट लूप होगी तो वो ऐसे पड़ी होगी, याद है, पर मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर यही होगा। सो वेदर इट इज अ करंट लूप और इट इज मैग्नेटिक डाइपोल और द मैग्नेट, हमने उसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेनी है। ठीक है, अब इस केस में फोर्स भी 0 है और टॉर्क भी 0, फील्ड यूनिफॉर्म। ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, हम क्या करेंगे,
बी को एम को डिस्प्लेस करते हैं, ये हम करते हैं बाय कॉजिंग दिस डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये करते हैं। अब एम क्रॉस बी ये लेते हैं, ट्राइज टू रिस्टोर इट, ये डायरेक्शन टॉर्क की है, टॉर्क इज इनटू द पेपर, इनटू द पेपर मींस it is tending to align the dipole along the field, right? Thus this torque, this is stable equilibrium, लिख देता हूं, torque tends to align the dipole along the field. Unstable equilibrium. Equilibrium, right? Equilibrium, okay. This is B. And this is B. Angle 180, theta is 180, फील्ड यूनिफॉर्म है, फोर्स भी जीरो है, टॉप भी जीरो, डिस्प्लेस करते हैं, ये बी की डायरेक्शन एक्सटर्नल है, और हमने इस पोजीशन से यहां कर दिया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट M, तो M क्रॉस B यहां, the torque will always tend to align the dipole along the field, whether इसको यहां से it was displaced from its position of equilibrium, the torque tends to bring it back to the same position. Here ये तो हिलने को तैयार था कि ये रही torque की डायरेक्शन into the paper, right? Torque tends to एक और बात ध्यान लेते हैं, पीछे आ जाओ, टॉर्क इज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? अगर मैं इसको यहां करता तो टॉर्क उसको वहां लेके जाता, तो टॉर्क इज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, टेंड्स टू अलाइन द डाइपोल अलोंग द फील्ड। यहां पे टॉर्क इज in the same direction as displacement. Torque tends to align the dipole along the field. हमेशा displacement are in opposite directions, वो equilibrium stable होता, and if the torque and displacement are in the same direction, वो भाग रहा है वहां से, इस पोजीशन पे आना चाहिए, M is always aligned along B। ये सारा unstable equilibrium हो गया जी हमारे पास। इसका एक और डायग्राम भी बना सकते हैं, बनाया हुआ ना उसमें मैंने, ये है B और ये हमारे पास इस पोजीशन से इधर आ गए M, तो यार कहां लिखा हूं, ये M है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो ये ऐसे लगेगा, बाहर यहां पे अंदर तो यार गलत बन गया था, वो शुक्र चेक हो गया, ये
ठीक था अंदर, ओके ठीक है। ये बात, ये बात ज्यादा पढ़ा दिया शायद, ये अंदर को ठीक बात। दोबारा ये पोजीशन थी, ये डिस्प्लेस किया टॉर्क अंदर को, ये डिस्प्लेस किया टॉर्क बाहर को, ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। यहां भी दूसरा केस करें, यहां भी दूसरा केस करते हैं कि हमारे पास ये था एम बी एक्सटर्नल और ये पोजीशन से मैंने इसे इधर कर दिया एम ये डिस्प्लेसमेंट एम क्रॉस बी तक ये टॉर्क, वो इसको इस पोजीशन पे लेके जा रहा है, इस पोजीशन पे हमेशा। पहली पोजीशन ये थी, यहां से भाग के वहां जाना चाहता, दिस इज टॉर्क जो कि बाहर को, ये टॉर्क अंदर को, फिर तो गलती कर रहे हैं ये अब ठीक हो गए, अब ठीक हो गए। फिर भी आप चेक कर लेना, मुझे दिखा देना ये सर ये गलत हो गया। अंदर को टॉर्क क्रॉस है, ये फील्ड भी है, बाहर को टॉर्क, हियर द टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन, इट डज नॉट वांट टू गो बैक टू दिस पोजीशन। हियर इन बोथ केसेस ना ये जो एम है ना, ये करंट लूप भी हो सकती है, करंट लूप का डायग्राम तो नहीं है, चलो कल करेंगे करंट लूप एंड मैग्नेटिक डायग्राम, ठीक है। और ये एक मैग्नेट भी हो सकता है, अगर मैग्नेट है तो ऐसे, करंट लूप है तो ऐसे। रिमेंबर दैट फॉर नो टॉर्क द प्लेन ऑफ द लूप शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन अलोंग बी। अगर कोई मैग्नेट है तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट उसके प्लेन में ही होती है, मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट उसके अलोंग है। ये मैग्नेट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। करंट लूप है, ये करंट जा रहा है तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट ये। सो वेदर इट इज अ मैग्नेट और इट इज अ करंट लूप, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट शुड बी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। आई होप वी हैव फॉलोड इट। थोड़ी सी तेज कराया, आपके +2 की तकरीबन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने रिवाइज करा दी। टुमारो वी विल डिस्कस द करंट लूप एंड द मैग्नेटिक डाइपोल, एक ही बात है, और फिर स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम करेंगे। होप यू एंजॉय योर लेक्चर।